So today's session will be started off by Arya and I'll be pitching in midway. We'll be answering your queries side by side. So if you have any doubts, drop them in the chat box preferably. So yeah, Arya, if you want, you can go ahead. Hi guys, I'm Arya Madhani. Welcome to day 4 of DataZen track. So today we are going to dive into a fun session on Matplotlib. I know data visualization can be a tad bit intimidating, but we'll take it slowly and try to make it a fun process. Feel free to ask your doubts. So let's start off with data visualization. Why is data visualization important? So we live in a data-driven world which is overpowered by data, be it analyzing daily trends or customer behavior or your day-to-day lives. Analyzing data is extremely important. So it is so making data visualization a very important part of our lives. Tools that can be used for data visualization in Python are Matplotlib, Seaborn, Plotly, Pandas, and many more. The star for today is obviously Matplotlib. Matplotlib is a very important library in Python which helps us convert raw data into visually appealing graphs and plots. Now, what is Matplotlib? It is a low-level graph plotting library in Python that serves as a visualization utility. It was created by John D. Hunter and it is open source, so it can be used freely. It is mostly written in Python with a few segments written in C, Objective-C, and JavaScript for platform compatibility. Matplotlib is a core module providing fundamental building blocks for creating plots. Many libraries like Seaborn are based on Matplotlib. Matplot, Matplotlib by .pyplot. It's a MATLAB-like interface which provides functions to interact with your graph. It creates figures, adds decoration to your graphs like plots like labels, Arya, and if you're sharing your collab file, I don't think it's visible here. Just share your window. oh, okay. 1 second. So Yeah, yeah. sorry. It's fine, it's fine. Okay, and so like to use Matplotlib, you need to import some necessary libraries. So that they are import matplotlib.pyplot as PLT. PLT is an abbreviation. You can use any, but PLT is better for user readability. And some other libraries that we'll need today are NumPy, Pandas, and Counter, which helps us count iterable strings, which we'll use further in the which will be used further in the Colab notebook. So let's import them. There are different styles that are provided by Matplotlib that you can see by plt.style.available. There are various styles like Solar Light 2, Classic Light Patch. The most common one is 538, which we'll be using today. It gives us professional looking clean graphs and visualizations. To use that, we are going to use a command called plt.style.use and the name of the style that you would want to use. So let's dive into plt.plot. This is a basic example on plt.plot. We are going to use some hard-coded data samples. So we'll begin with initializing some lists, the months of the year, and we are taking the average temperatures of 3 cities, A, B, and C respectively. We are going to plot a graph month by the average temperatures of the city to see which city has the most temperature and which city has the least temperature over the months of the year. The command for
plotting the data for city A is plt.plot. Then you use the then you take the label that you want for the x-axis, that is the months, and for the y-axis, that is city A temps. And the other part is the decorations of the graph, like color, which for city A is going to be red, a marker that is going to be a circle, the line width of a line graph, and a label, which will help the user see that which line is which city. And the same thing is done for city B and city C. Just the just the color used are different, green and blue, and the marker for S stands for square and a cap stands for triangle. Some some other decorations that you can add for your graph to look visually appealing are the labels on the axis, the title of the plot, and etc. plt dot p Soumya, could you please Soumya, please mute yourself. So now plt.x label obviously is for the x-axis, which is going to be our months, and plt.y label is obviously for the y-axis, which is going to be the average temperature, and it's taken in Fahrenheit over here. The title of the plot is it is done for the readability of the graph. Anyone who looks at the graph should come to know what the graph is in 1 second. plt.legend, you know that small box that is there for that denote the different colors of the graph, that is plt.legend. And plt.grid, it adds a grid to your graph which can help you take readings in a better way. plt.typeplot is done to optimize your graph. It adds in paddings or removes paddings where it is not required automatically. And plt show is obviously to display your graph. Oh, sorry, I forgot to run this. Okay, so here is our graph, which shows the different temperatures of city A, B, and C. Clearly, city A has higher temperatures and city C is on the cooler side. And here are the markers, circle, square, and a triangle. This box is the legend of the graph. And you can clearly see which city has better temperatures, and it's so now in real world, you can't use sample data or hard-coded data. You use CSV files. CSV stands for comma separated values, and they can be taken from Kaggle, etc. So let's take a look at how such files can be used by us and have its data incorporated in the Colab notebook. For that, we need to import a library of Python called as open datasets. So first we'll pip install open datasets, and this upgrade is used for if you already have it installed, then it will just upgrade the version of the open dataset. So now after installing it, you need to import open datasets as well. And we use OD because makes our life easier. So why not? And the command to download the dataset directly from Kaggle is od.download and the link of your dataset. Today we are going to use an e-commerce dataset to see the trends in an e-commerce shop. So over here, you see you asked your Kaggle username, which you can go or wait, I'll just share my Kaggle screen for you all to be able to see how to do so. So this is my Kaggle homepage, and you'll need an API key for you to be able to download the dataset into your directory, which you can do that by going to settings. So click on the geese-like emoji, go to settings. When you scroll down, you'll see a heading called as API. Over here, you just need to click on create a new token and continue. And a JSON, Kaggle.json file is downloaded, which will give you your key and your username, and that you can put it into your Colab file.
So my username is Arya1764 and my Kaggle key is in the kaggle.json file. So once I put that in, the you see the URL is downloaded into the directory as a zip file, and now you can't use CSV files. You need to convert them into a data frame. That can be done by using a simple command in pandas, that is pd.read underscore CSV. You put in the link to your Arya, just CSV file. switch to your collab file once. Oh, It's I fine. keep on forgetting. It's fine. It's fine. Yeah, so y'all, sorry. So y'all see that the data set is downloaded into my directory as a zip file. And now I'm reading the file as a data frame, and I put in the link over here. And this extra things that y'all see, index underscore column as equal to 0, it is done to say that the first column of a CSV file is going to serve as the index, and we are doing a zero-based indexing. And the header is equal to 0 means the first row of our CSV file is going to serve as the header of the file, like products, category, etc. So now when you're plotting graphs, you need to do some basic analysis on the data set. You can't just plot blindly. You need to know what your data set is about and what graphs are going to be beneficial to you. So you need to do some basic analysis on your data set. These are most basic commands to analyze your data. This shows what are the null values, what are the NaN values, missing values, etc. So you need to clean your data set and make it more feasible for you to be able to plot graphs. df.info will show the basic information about your data set, like the number of columns, the number of rows. Then df.describe gives a basic statistical summary of the numerical columns, like the number of null values, non-null values, the data type. In our file, we don't have any null values. All of them are non-null, so it's great for us. And the data types are object, float, and int. Object means there is a mixture of Boolean values, integer values, and float values. And df.head is done to display the first 5 rows of your data set. I'm so sorry. Display the first 5 rows of your data set. This gives you a very basic review of what your file is all about. So we have the column product name, category, price, rating, num review, stock quantity, discount, sales, date added, which is in year, month, and day format, and the city of the product, city of origination of the product. Okay, so now when you're plotting graphs, you need to group some of them and you need to do some aggregation for it to be easy for you to be able to plot the graphs. So you need to group some values based on their category, and then if you want to find the sales of each category, then you'll group by the category and then find the sums of that particular category. So that is what we are going to do over here. This is the over here df.group by means all the categories will be grouped, and then the sales of that category will all be added up to give us the sum and this is the printed value. So you can see now all the categories are grouped up, and this is the total number of sales. Now finding the sum for rating, as we can see, our ratings are from like it out of 5. So finding a sum of them would just be futile. So over here we find the mean of the ratings to keep the values out of 5 only. So you group by city and then you find the ratings of the product. So this can help us know which product is most highly rated, which product is sold the most. So for the dealer to be able to give more quantities of the products, and we group by category based on the we group and we find the mean of the price based on the categories. So bath and body has a mean price of 2638.12 and some float value. So now we are done with the basic
aggregation and grouping. Let's move on to our plots. Bar chart is the most commonly used chart, and it is done mainly for categorical data. So sorry. So that's what we'll exactly do over here. We are going to plot the category by sales chart to know which category has the highest sales. Okay, so now let's set the figure size of the plotting. So this sets a grid for the graph, and the most commonly used fixed size is 10,8 to make make the graph big and visually appealing. The syntax for this is plt.figure, fixed size equal to whatever the coordinates you want. It can be smaller also, it can be bigger also, depending upon how you want to customize it. Now, to plot a bar chart, the main syntax is plt.bar, and this index stands for the left column, which is this, and the value stand for this column. And we are going to use category underscore sales, which we had already defined over here. So this is going to be the x-axis, and this is going to be the y-axis of a bar graph. And this all color, the default color of a bar graph is blue, but if you want to add on some other color, you can do so. My favorite color is sky blue, so I'll put in sky blue. Now, the X label, Y label, and the title, the basic decorations of your graph, and now adding the grid. Now, that is upon you. If you want to add the grid for your graph to look more readable, you can do so. If you don't want, you can put it as false as well. So over here, and then the extra stuff that I've put in over here means axis is equal to y, means that the grid is going to be along the y axis, the line style is going to be dash, and the alpha means the transparency of your grid. 0.7 means it won't be pitch black, it will be a bit grayish in color. And plt.tight layout to optimize our graph, and plt.show to display our graph. So here is our graph, which shows the total sales by category. But you see, this is so clustered up, overlapping, you can't even read it, which causes a very bad user experience, and you can't even conclude anything from this graph. So it is you can use a very basic command to solve this issue, that is inverting the axis. Everything over here remains same except for bar. Over here, instead of bar, you use bar H, which means a horizontal bar graph. So you plt.bar H, and everything other things remain same. The axis remains same, the index, the values, and the color, everything remains same. And look over here. Now you can clearly see the categories and clearly see the total sales. So from this, you can determine which category has the least sales, so you can discontinue that. Which category has the most sales, so you can put that more in stock, and so on. So now for the next graph, I would like to pass it on to my friend Vedant. Yeah, I'll be stepping in. 1 second. Okay, wait, the collab file hasn't been shared yet. Yeah, I'll update the team. I'll let them know. Give me a minute. Harsh, if you can pitch in, just let them know. Yeah, okay. So 1 second, I'll just share my screen by that time. Uh, yeah. Okay. Okay, I hope my screen is visible to you guys. Yes, Vedant, it is visible. All right. Okay, fine. So now we'll be starting off with the pie chart. So compared to the bar graph, which gives us a general idea as to how qualitative the values present in each category is, the pie chart in general gives us a composition as to how each category builds the database in general for us. So let's say you have some data points, right? So we'll start off with a basic pie chart before we get to that part. So right here, as you can see, if it's a pie, you're going to have slices, am I right? So you start off with two slices here in this case. So right here you see 70 and 30 as the individual elements in this list called slices. So what this is doing is basically it's assigning a percentage value, a percentage as to how much of the pie each element or each slice will be covering.
So the blue part is 70% and the orange part or the red part is 30%. Right. So now here, just like you had plt dot bar h, right? You'll similarly have plt dot pi. So the syntax is relatively simple. As to the charts, it's a matter of perspective and how you're going to implement the chart. So right here, you'll have your pie chart followed by the title for it. Cheek So, tabak dum dum. okay, fair enough. Uh, Follow that by your title, which you can use in the graph here. So my first pie chart right here, that's something basic. So let's say you want to change it up. So DataZen's day 4 pie chart. Okay. Now, tight layout is essentially basically just boxing it in a smaller format. This is not that important. It's just a matter of keeping it cleaner. So let's say you just do this again. So yeah, you can see it here. This is pretty basic. And you can follow this up by adding labels to it as well. So here when you say see 70 and 30, you're not able to understand how much of the pie chart each slice is covering simply by looking at it, right? So let's say I want to label each slice. In that case, you can add labels here. So 70 is for the blue part, 30 is for the orange part. So here, always keep in mind that you have to make sure that each label aligns with each element you've put here. If I put 30 here, and 70 here, this will still run, it won't give an error. So it's your job to make sure that the data points match and it's making sense. I'll just put this back in place. I don't want to confuse you whenever you're revising. 30. Okay, that should be it. All right, now, so another feature that you can add to this is basically just make the borders slightly darker. Yashab, if you can mute yourself, that would be great. Okay, never mind. I'm going to continue by that time. Right. So the feature that you can add here is basically an edge color, which could be black. So what I mean by that is basically this part right here. You see this? It's slightly darker. The borders are slightly darker compared to the first chart. So here you can see we've added this parameter, wedge props. That's fine, right? Oh yeah, I forgot to tell you guys. Yeah. So labels is also a parameter of pi which you have to add. It's basically assigning your list to that parameter. Wedge props likewise will add edge color. You can check out other wedge prop parameters like edge color, and you have explode as well going forward. That you can check out later from the documentation. This is basically for you guys to understand what all you can do right now. Right. So now I'm going to follow that up with actually adding more colors. So till now, you saw that, let's say, most of our slices were adding up to 100. Am I right? So here, let's say if I take 120 and 80 and 30 and 20, that's 250. But the pie chart will scale it down to 100 again. So each of this, let's say 120 divided by 250 into 100. So that's what you'll get. Okay, let's see if you guys remember. So you can obviously use Python as a calculator here as well. So 250, and if I add brackets here, into 100. So that's basically how much portion of the pie chart this specific slice is representing. So if you check this out here, we've added the label separately as string values as well. So this pie chart here will have 120 respectively for 120, 80 respectively for 80, and likewise. So that's that. Now you can see that obviously this pie chart is slightly more colorful, and we've added colors here. So this is actually the hex encoding for each color. One second, if one second, just I'll show you the hex colors. That's fine. Hex colors. One second, I'll just share my screen. Okay, I'll share my window here. Okay.
Right. 1 second. Okay, I'm sorry, I didn't read the chat box here. Hi sir, if there is a pie chart of various elements and we have to take percentage of all elements, then how can we do it? Okay, yeah, we'll be covering that ahead as well, Sanika, don't worry. Uh, file. Yeah, don't worry, we'll be doing that. No worries. Okay. So yeah, hex colors right here. So this is, if you guys are familiar with web development or JavaScript, you'll be working with hex colors a lot. So as you can see here, you get this hex code here. So basically you can use this as well. So let's see if I can change the colors there as well. So here, instead of having our dark green here, which is for 20, am I right? So if I swap this with the hex color I took from there, you'll get a lighter green. So 1 second, I'll just share my collab file only now. I'm sorry, just give me a minute. Yep. This hex color is in paint application. Okay, yeah, sure. You could relate that as well here. I have not used much of paint, honestly. Yeah. Okay. Right. Okay, so now let's look at a real world example. So we just work with a data frame right here, right? So now applying whatever we've learned on top, if we use this. So we'll be using group by again for aggregation. So we'll use category, which we had seen on top here as well. I think we had done category and sales and prices as well here. So category and price, yeah. We had done category and price and we had done category and sales. Correct. So now let's move down back here. All right. So you can see the pie chart that you get beforehand here, but let me give you an idea as to how this is working exactly. So let's say I just take this code, this snippet right here of the code, and I run this category stock. This will give you a general idea as to what we are plotting exactly, right? So you can see here, this is the stock quantity for arts and craft materials, for bath and body, bed sheets, bicycles, and likewise. So when you have so many elements to work around with, trying to identify as to what exactly holds a significant chunk of your stock is pretty hectic and honestly a major pain for, let's say, retail workers and other pharmacists or in general other shopkeepers. So this is what helps to get a stock quantity distribution by category. So you can see this is a bit messy, and obviously we'll fix that as well going forward. So again, the same logic, we'll be using our plt.py, we'll be using these data points here, and we'll follow that up with our labels. Now, okay, I'll show the labels as well. So I'm sure you guys had already worked with pandas and numpy, but obviously I'll show you the index here as well. So this is basically another parameter that you can use with your dfs and series data sets. Okay, so you can see this is your index, which is perfect. You have your data points, you have your index all set to go, and you get this plot. Now, this is kind of messy. We can't work with this. We can't have overlapping labels. All in all, let's say you have to present this to a client or someone who's in charge. This doesn't look good. So, our job is basically to get a significant, let's say, representation of how each major chunk of the data is being used. तो अभी मैं यहाँ पे एक change करूँगा. अभी category stock as it is I'll use, but I will show only the top categories. सबसे ज़्यादा representation किसका होगा ये data set में या फिर ये data points में से. अभी ये बेसिकली ड्रिंक वेयर हो गया, ये सब आर रिलेटिवली लुकिंग बिगर. बहुत डेटा पॉइंट्स रहेंगे तो यू वोंट बी एबल टू फिगर आउट कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इन दैट केस यू कैन यूज एन लार्जेस्ट, जैसे हम लोग सॉर्ट वैल्यूज करते हैं ना पैंडास में. अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, ये जो ग्रुप बाय दिख रहा है ना, दिस वोंट गिव यू अ पैंडास का डेटा टाइप, दैट विल गिव यू अ ग्रुप बाय डेटा सेट. सो लेट्स से आई जस्ट टेक दिस अगेन वापस. तो df डॉट टाइप करते हैं पहले हम लोग. ओह सॉरी, माय बैड. टाइप
of df. सो इन दिस केस अभी यहाँ पे आपको डेटा फ्रेम दिखेगा, अच्छे से आएगा. बट अगर मैं ये लूंगा तो आपको एक चेंज दिखेगा अभी. ओके, यहाँ पे सीरीज आएगा. बट इन जनरल जब हम प्लॉट करते हैं ऐसे ही विदाउट द टाइप, तो अभी तो दिखा तो नहीं रहा है, बट इन मोस्ट वेरिएशंस यू विल सी दैट अ ग्रुप बाय का pandas का अलग से टाइप का आता है. तो अभी आई थिंक अपडेट हुआ है. बट इन ओल्डर वेरिएशंस यू सी कि बेसिकली टाइप वाज बाय डेटा फ्रेम डॉट टाइप. अगर मैं अभी इसको अच्छे से यहाँ पे करके सॉर्ट डालूंगा तो आपको टाइप में दिखेगा फर्क. लेट्स से सॉर्ट भी नहीं, लेट्स से आई डू समथिंग लाइक दिस, टॉप 5. यप. तो यहाँ पे इंडेक्स एरर दिखेगा फॉर pandas एंड स्पेसिफिकली फॉर abc सीरीज. तो अभी ये abc सीरीज इज बेसिकली आपका ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट. सो आई होप दैट मेक सेंस. दिस इज जस्ट बेसिकली इन डेप्थ में क्या चल रहा है कोड के पीछे. दैट्स इट. अभी ये एन लार्जेस्ट बेसिकली टॉप 5. दैट्स वेरी सिंपल. आई वाज जस्ट गिविंग एन आइडिया एज टू हाउ इट वर्क्स इन जनरल. ओके, अभी सिमिलर लॉजिक यहाँ पे भी हम लगाएंगे. टॉप कैटेगरीज आपके डेटा पॉइंट्स का, टॉप कैटेगरीज आपके लेबल्स का या फिर इंडेक्स पॉइंट्स का. ठीक है, ये सिंपल है. वापस हम लोग एज कलर ब्लैक रखेंगे. ऑब्वियसली टॉप 5 कैटेगरीज आपको मिल गए. तो अभी आपको दिख जाएगा यहाँ पे कम आइटम्स आर विजिबल. सो बेसिकली यू गेट अ क्लीनर पाई चार्ट एंड अ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. ओके, अभी मैं जस्ट एक बार चेक करता हूँ कुछ चैट में कुछ आया है क्या. राइट, ठीक है. एनी क्वेश्चंस अभी तक? आई होप वो बीच का डेटा टाइप का सब आपको समझ गया. ओके फाइन, आई विल मूव अहेड फिर. ठीक है, अभी एक स्पेसिफिक आइटम को अगर हाईलाइट करना है तो आप क्या कर सकते हो. ठीक है, अभी बॉर्डर्स तो बन गए. तो लेट्स से मुझे स्पेसिफिकली ये जानना है कि इनमें से बुक्स छोड़ो, अभी बुक्स कौन ही पढ़ेगा अभी बैठ के. मोबाइल फोन एंड एक्सेसरीज का आपको देखना है कि कितना ये कैटेगरी स्पेसिफिकली कितना रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे पाई चार्ट में. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक नया पैरामीटर ऐड करेंगे. एक्सप्लोड मैंने ऊपर बताया था ना. सो दैट स्पेसिफिक लिस्ट वी विल बी यूजिंग इट हियर इन आवर पाई चार्ट. सेम लॉजिक यहाँ पे भी, ओनली डिफरेंस इज एक्सप्लोड. तो ये तो ऑब्वियसली ऊपर देखा हुआ ही कोड है. नाउ एक्सप्लोड क्या करेगा. ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे हमने कैंडल्स का किया है, कैंडल्स कौन करेगा, मोबाइल फोन एक्सेसरीज. ठीक है, वी विल डू दैट. ओके हाँ, तो अभी ये दिख रहा है, ये जो डिफरेंस आपको समझेगा. इफ यू चेक आउट द प्रीवियस पाई चार्ट विद दिस वन, यू विल सी दिस हैज बीन सिग्निफिकेंटली हाइलाइटेड compared to the other components here, which is pretty great. So that's what you want यहाँ पे. अभी जैसे एक्सप्लोर यहाँ पे किया, अभी मैं इसका थ्योरी समझाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे. अभी हम लोग कैटेगरी के हिसाब से वी आर प्लॉटिंग अपना पाई चार्ट, माय बैड. And category, if it is mobile phone accessories, what you have to do is उसको 0.1 असाइन करना है. तो ये बेसिकली एक डिफरेंट टाइप का इफ स्टेटमेंट है विच यू कैन यूज विद इन लिस्ट इटसेल्फ. ये काफी हेल्पफुल है स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग विद numpy arrays as well. तो लेट्स से अगर कैटेगरी आपका मोबाइल फोन एक्सेसरीज है तो वो केस में आपका वैल्यू 0.1 असाइन होगा. नहीं तो या फिर एल्स योर वैल्यू विल बी 0. आई होप दैट मेक सेंस. अभी ये तो इफ योर फॉर लूप लगाओगे तभी चलेगा, राइट. सो फॉर लूप का कोड यहाँ पे ही हमने डाल दिया है. दिस इज बेसिकली योर एंटायर फॉर लूप इन वन लाइन विद इन अ लिस्ट. सो ये बेसिकली आपके कोड को बहुत कंसाइज रखता है एंड दैट इज व्हाई इन जनरल पीपल प्रेफर टू यूज दिस. So perfect, good practices के लिए I would recommend using this. You would follow that up with obviously adding आपका explode का part यहाँ पे. ठीक है, make sense. अभी I think हाँ ठीक है, I'll show you something else also यहाँ पे. अभी for 1 minute let's say I comment this out.
एंड एक्सप्लोड में अभी लेट से मेरे को बाकी भी एक्सप्लोड करना ही है, तो मैं 0.1 डालूंगा। अभी मुझे एक मिनट, मैं टॉप कैटेगरीज एक बार प्रिंट करता हूँ सो दैट आई हैव एन आइडिया कि क्या चल रहा है यहाँ पे कोड में एग्जैक्टली। ओके हाँ, तो बुक्स आपका सबसे बड़ा पॉइंट है, तो लेट से इसका मैं 0.2 रखता हूँ। फिर स्किन केयर का मैं 0.02, फॉलो दैट अप विथ 0, इसको 0 ही लगते हैं। लेट्स से पोस्टर्स को, इसको हम लोग 0.05 एंड इसको 0.1। अभी मैं रन करूंगा तो ऑलमोस्ट सब लोग एक्सप्लोडेड रहेंगे विथ डिफरेंट वेरिएशंस। सो ये बेसिकली इट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि हाउ यू कैन स्विच दिस अप। तो आई होप अभी तक यू गाइज हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज दिस ब्यूटी ऑफ अ मॉड्यूल एज ऑफ नाउ, राइट? लेट्स फॉलो दैट अप विद दिस, आई विल अनकमेंट दिस पहले के जैसे ही रखते हैं सो दैट यू गाइज हैव अ रेफरेंस गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। ऑलराइट, अभी ठीक है, अभी यहाँ पे आई कैन सी कि सबसे ज्यादा पोर्शन इतना समझ नहीं आ रहा है ऑनेस्टली, लेट्स बी ऑनेस्ट। बुक सबसे मेजॉरिटी है, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट अनलेस यू चेक आउट द डेटा हियर, राइट? तो जस्ट टू वर्क अराउंड दैट यू कैन ऐड परसेंटेजेस एज वेल टू दिस पाई चार्ट हियर, ठीक है? तो ये परसेंटेजेस को मैं ऑटो पीसीटी से ऐड करता हूँ, एंड ये क्या करेगा बेसिकली आपके फॉर्मेट को अच्छे से दिखाएगा परसेंटेज को। अभी मैं यहाँ पे लेट्स से 2 करता हूँ तो आपके 2 आ जाएंगे। अगर परसेंटेजेस पे फोकस करना, लुक एट दिस 20.51, फॉर दैट आप 3 एंड you'll get 3, that's it, that's all that is there to this percentage वाला पैरामीटर। Okay, so अभी के लिए that wraps up अपना pie chart. Now we'll move on to histograms. अभी Vedant, Sanika wants to ask you a question. Can you sure, address that? ठीक है। I'm trying to code with you, but in it's showing error in code simultaneously. अच्छा, ठीक है, क्या एरर आ रहा है सानिका? और कोई क्वेश्चंस थे? What is the use for loop? विनायक समझ गया ना क्या चल रहा है वो लूप में, और यू वांट एन एक्सप्लेनेशन वापस? Could you explain again? हाँ हाँ ठीक है, श्योर, पूछ लो, अनम्यूट भी करके बोल सकते हो, इट्स फाइन। ठीक है, हाँ, अभी ये क्या हो रहा है, मैं एक बार आपको ना क्या करता हूँ, इसको मैं स्प्लिट करके भी दिखाता हूँ आपको कि क्या चल रहा है। तो ऐसे जब हम लिखते हैं ना, ये दिख रहा है आपको, व्हेन यू आर राइटिंग दिस, हम लोग राइट टू लेफ्ट जाते हैं इंस्टेड ऑफ लेफ्ट टू राइट। यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम यहाँ से, तो मैं पहले इसको लूंगा, आई पेस्ट दिस हियर, ठीक है? फॉर कैटेगरी इन टॉप कैटेगरीज डॉट इंडेक्स, ये आपका टॉप कैटेगरीज का इंडेक्स है। बेसिकली ये बुक्स, स्किन केयर, पोस्टर्स, आर्टवर्क, कैंडल्स, मोबाइल फोन एक्सेसरीज। आई होप ये पार्ट क्लियर है। अभी उसके बाद ये राइट टू लेफ्ट, ये मेजर पढ़ तो लिया, हाँ ठीक है, सीख कोलैब स्मार्ट है तो बेसिकली मुझे कोड दे रहा है इधर ही वो, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो एक बार ये आपके कैटेगरीज आ गए आपके हाथ में, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, लेट्स से माय कैटेगरी विल मैच मोबाइल फोन एक्सेसरीज, तो मैं बेसिकली ये कर दूंगा एंड आई जस्ट प्रिंट इट। ये बेसिकली आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ इट्स रनिंग। तो अभी एक्सप्लोड इक्वल टू 0.1, ठीक है? तो अगर मोबाइल फोन एक्सेसरीज का वैल्यू आता है एज कैटेगरी, आई विल कीप एक्सप्लोड एज 0.1, परफेक्ट। लेट्स से नहीं है मोबाइल फोन कैटेगरीज का, तो इन दैट केस आई विल कीप एल्स एज एक्सप्लोड इक्वल टू 0, दैट्स इट, इतना ही है कोड। एंड अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपको वैल्यू वही आएगा। सॉरी एक मिनट, एक गलती की मैंने, ये लिस्ट रहना चाहिए, मैं अभी डाल देता हूँ बिफोर आई गेट एन एरर फॉर यू गाइस, ठीक है? परफेक्ट। अभी मैं ये रन करूंगा, ओके, एज का एरर आएगा अभी यहाँ पे, एज का एरर कहाँ आ रहा है? ओके हाँ ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर ये वैल्यू
मोबाइल फोन एक्सेसरीज आएगा तो तभी ही मुझे 0.1 करना है, ठीक है, अच्छा हुआ ये एरर आ भी गया। तो बाकी सब वैल्यूज का मुझे 0 ही रखना पड़ेगा क्योंकि बाकी वैल्यूज भी है ना हमारे, तो दैट इज व्हाई दिस एरर पॉप्ड अप, माय बैड, आई एम सॉरी, बट या सो दैट वाज 1 2 3 4 5 परफेक्ट, ठीक है, ये होगा। तो इन दैट केस बेसिकली हम लोग इसकी जगह क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोड डॉट अपेंड 0.1 एंड एक्सप्लोड डॉट, एक मिनट, माय बैड, डॉट अपेंड 0, अभी ये चलेगा, ओके, एक्सप्लोड, हाँ ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, फॉरगिव मी भाई, इधर एक्सप्लोड इक्वल टू लिस्ट करके मैं करता हूँ, स्पेलिंग कहीं सही लिखा ना मैंने, ठीक है, दैट शुड वर्क, ठीक है। नाउ अभी ये रिजल्ट समझा ना, तो बेसिकली यही हो रहा है। विनायक ठीक है? Yes, yes. Thank you. ओके, परफेक्ट, मैं इसको निकाल देता हूँ अभी के लिए, एंड या जस्ट कीप इट एज इट इज। सानिका का क्या इशू था? And I guess we can do it for multiple categories as well. सिर्फ एक हाँ category हाँ, के लिए explode नहीं कर सकते. We can do it for करेक्ट multiple करेक्ट, categories. ये इधर जैसे किया था ना, वो करके एक दिखाया था आपको, वो वैसे ही करना है, तो वो एज इट इज है, दैट इज फाइन। हाँ, एक मिनट, सानिका का, हर्ष तो देख पाएगा क्या सानिका का क्या इशू है? हाँ ठीक है चलेगा, मैं देख लेता ठीक है, फाइन, आई जस्ट कंटिन्यू विथ माय कोड तब तक, ठीक है। हिस्टोग्राम्स का चार्ट, वी वोंट वेस्ट ज़्यादा टाइम अभी। ऑलराइट, अभी ये बेसिकली यहाँ पे बीएससी स्टैट्स वाले कितने हैं? ओके, परफेक्ट, सो यू गाइस मस्ट बी फेमिलियर विद द कांसेप्ट ऑफ हिस्टोग्राम्स, ठीक है। मैं इन शॉर्ट बताता हूँ क्या है। बेसिकली ये प्राइस जो है अपना, उसका नंबर ऑफ प्रोडक्ट से क्या रिलेशन है या फिर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ ईच ऑफ दीज डेटा पॉइंट्स, बेसिकली वो विथ बार चार्ट दिखाने के लिए हम लोग हिस्टोग्राम यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं यहाँ पे, इन शॉर्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 वाले प्राइस का कितना है, लाइकवाइज 200 वाले प्राइस का कितना है, वैसे। अभी बिन्स इक्वल टू 5 क्या है, अगर मैं बिन्स इक्वल टू 5 रखूंगा यहाँ पे, सो आई विल गेट 5 बार्स, ओके, इंडिविजुअली। ये अच्छे से अभी नीचे एक और हिस्टोग्राम चार्ट में दिखा दूंगा मैं, बट बेसिकली वही है। अभी plt डॉट टाइटल क्या है, टाइटल तो अपना ये रेगुलर वाला, x लेबल इज x वाले का लेबल, y लेबल, वो सब बेसिक, वो सब आता ही है। अभी हाँ, एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा भी है, ये ज्यादा रीडेबल नहीं है, तो इसको रीडेबल बनाने के लिए वापस वी विल यूज एज कलर इक्वल टू ब्लैक, ओके। तो अभी यहाँ पे यू कैन सी परफेक्टली 5 बार्स बन रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं दिख रहा था, बट here is pretty evident, right? That's it, that's all that is there to histogram, but अभी let's say we improve it, थोड़ा अच्छे से दिखाते हैं, right? Okay, अभी ये अभी हिस्टोग्राम हमने बिन्स इक्वल टू 5 से किया है एंड हमें 5 ही बार्स आ रहे हैं। लेट्स से मुझे स्पेसिफिकली डालना है कि ये पहला वाला इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 0, दूसरा वाला शुड स्टार्ट फ्रॉम 100, तीसरा वाला शुड स्टार्ट फ्रॉम 200। सो इन दैट केस मुझे स्पेसिफिकली डालना है वैल्यूज, तो यहाँ पे मैं बिन्स में इंस्टेड ऑफ एडिंग अ नंबर, मैं लिस्ट डाल दूंगा ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट्स, जैसे फर्स्ट बार विल स्टार्ट फ्रॉम 0, सेकेंड बार विल स्टार्ट फ्रॉम 50, थर्ड बार विल स्टार्ट फ्रॉम 100, एंड वैसे करते हुए ये प्लॉट आता है हमारा विद एज कलर ब्लैक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइसेस। आई होप ये समझ गया सबको। Is this clear? Okay, I'll move on if there are no doubts. ठीक है, all right, default bin size may not reveal, ठीक है, ये सब पढ़ लो, but basically अभी मैं शॉर्ट में बताता हूँ। बहुत वैल्यूज रहेंगे आपके, लेट्स से देयर आर प्राइस में अभी वी आर जस्ट सीइंग 0 100 200 300 400 500, लेट्स से यू हैव फ्रॉम 0 to let's say a million. In that case, if you're seeing prices ऐसे, so then that will be hard, quite hard.
तो basically in short you can use it in this manner. That's all that is there to histogram. अभी लेट्स से मेरे को बिन्स एडजस्ट करने, तो वो 5 का 20 वो सब यू कैन चेक इट आउट हियर. बेसिकली ये क्या करेगा ना, अभी लेट्स से मैं 50 के जगह और कोई वैल्यू डालूंगा, तो उसके हिसाब से वो 0 से 30 तक ये बेसिकली क्या कर रहा है, 0 से 50 तक जितने भी वैल्यूज है उनका काउंट देगा. अगर मैं इसको 30 करूंगा अभी, लेट्स से एरर तो नहीं आना चाहिए, हाँ एरर नहीं आएगा, परफेक्ट. तो यू कैन सी द चेंज, बहुत ज्यादा वैल्यूज ऐड हो गए, मैं राइट. तो बेसिकली यू कैन जस्ट प्ले अराउंड हियर यहाँ पे जस्ट टू फाइंड आउट कौन सा वाला वैल्यू का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कौन से क्लास का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. दैट्स इट. ओके, नाउ एडजस्टिंग नंबर बिन्स सेम एज अपना 5 किया था, यहाँ पे बस 20 डाला है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है. अभी यहाँ से देख के हमें ये पता चल रहा है कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इज मैक्सिमम हाइट वाला बार, या फिर bar which has the maximum number of products in it is the one which is touching 200. That is in this case 180 to 200. तो let's say मुझे वो region को highlight करना है, तो you will use this right here, axv span करके एक आता है a function which will basically highlight that region for you separately. तो अभी यहाँ पे blue किया है, करेक्ट, तो ये रीजन स्पेसिफिकली हाईलाइट हो चुका है. लेट्स से मुझे आई डोंट नो ग्रीन करना है, वो कलर्स का यू कैन चेक इट आउट ऑलवेज, बट दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. बेसिकली टू हाईलाइट दिस रीजन यू कैन यूज axv span. ऑलराइट, अभी हाँ, अभी लेट्स से आपको स्पेसिफिकली मीडियन का डालना है. मीडियन पता है सबको यहाँ पे? The CSV file used with Panda seems to give an error. It is not showing in the files tab in the content folder, at least for me. I'm sorry, एक मिनट में चैट्स पढ़ रहा था यहाँ पे. User Panda seems to give an error. It's not showing in the files tab in the content folder. Shaurya, refresh कर ले. Yeah, Sanika, go ahead. Same with me. Same with you. अच्छा. Error. अच्छा, तुम लोग ने वो कैगल से API की डाउनलोड, ओके, कंटेंट दिस फाइल टू बी, ओके. यहाँ पे तो इशू नहीं आया. आई होप तुम लोग ने कैगल से ही किया है ना, या फिर यू गाइस डाउनलोडेड इट एंड देन फिर यू अपलोडेड इट अलग से? शौर्य, सानिका, एनी वन ऑफ यू गाइस कैन आंसर. आई हैवंट डाउनलोडेड वाया कैगल. ओके, एक बार ट्राई कर लो वो भी. आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू चेक तुम लोग ने कौन से सेल्स रन किए हैं. विदाउट दैट आई वोंट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट ठीक है, we'll come back to that later. एंड में मैं बताता हूँ. अभी के लिए जस्ट लिसन टू दिस एक बार so that you have an idea about the concepts. ठीक है, परफेक्ट. अभी हम कहाँ थे? राइट, ठीक है. उप्स, मेरा हैंग हो गया क्या? सॉरी. हाँ ठीक है, वी वर ऑन दिस मीडियन वाला. राइट, तो मीडियन सबको पता है होप. सो बेसिकली मीडियन इज द center point of your entire data, basically the middle value of your entire data set sorted. प्राइजेस में से मीडियन वैल्यू 251 है. बेसिकली आप सारे वैल्यूज को 0 to 500 सॉर्ट कर दो, उसमें से एग्जैक्ट dab smack in the middle of that data set you will get 251.31. That's why that will be your median. Okay, any doubt? ओके ठीक है शौर्य, जस्ट चेक इट आउट एक बार. परफेक्ट. हाँ, तो मीडियन को अभी हमने जैसे axv डॉट स्पैन किया था फॉर हाईलाइटिंग इट, यू कैन यूज axv डॉट लाइन टू गेट दैट लाइन. दैट्स इट, बस उतना ही है. ये कलर रेड है आपका. लाइन विड्थ लेट से मैं 2 से 4 करता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस. लेट्स सी, you'll get a thicker line. That's it. So you can just tweak around and play around with these parameters as per your reference. लेबल, अभी यहाँ का लेबल आपके लेजेंड में ही आएगा. जैसे ऊपर वी हैड अ लेजेंड फॉर बार चार्ट ना, लाइकवाइज दिस लेबल विल बी हियर एज वेल. दैट्स इट, जस्ट चेक इट आउट एक बार. सो सी, बेसिकली मैं मैटप्लॉटलिब का आई विल टेल यू अ जनरल थिंग.
It's more about application of all these parameters rather than itself as a concept. So you have to be creative as to how you're presenting your data rather than trying to understand ki okay, let's say I've got this plot. That's not the general point of Matplotlib. The idea of Matplotlib and all of these data visualization tools is to help you present your data to a person who's not, let's say, familiar with data science in general. अभी you tell him कि median ये है तो maybe he won't be able to understand, but if he sees this यहाँ पे he'll be like, oh okay, ये बीच में से जा रहा है कुछ तो शायद ये बीच वाला पॉइंट है अपने x वैल्यूज का. So that helps a bit. अभी टाइम सीरीज प्लॉट, ओके, ये थोड़ा आउट ऑफ स्कोप भी रह सकता है तुम लोग के लिए, बट ठीक है, वील डू दिस एज वेल. टाइम सीरीज प्लॉट, यहाँ पे ट्रेडिंग कौन करता है? कोई करता है यहाँ पे? ठीक है, शौर्य करता है. ठीक है, नाइस नाइस, ओके कूल. तो बेसिकली तुम लोग ने वो अपने टाइम के हिसाब से, यू मस्ट हैव सीन ऑल ऑफ दोस प्लॉट्स, राइट? बेसिकली दिस इज दैट फॉर फोक्स हु डोंट ट्रेड. लेट्स से आपका अटेंडेंस है अभी केजेसी वालों को, तो यू गाइस मस्ट बी वरीड अभी विथ रिस्पेक्ट टू अटेंडेंस, बट ठीक है, सैड एग्जांपल बट वील टेक इट. सो टाइम के साथ लेट्स से यू वांट टू शो योर अटेंडेंस कैसे है, तो उसके लिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एनी प्लॉट दैट यू डू इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज प्लॉट. मोस्टली वो आपका लाइन प्लॉट ही रहता है या फिर लाइंस के साथ ही रहता है वो. तो ये आपका डेट टाइम करके एक मॉड्यूल है विच यू कैन यूज टू चेक आपका टाइम. जैसे यहाँ पे है अभी, ये क्या रह सकता है? ठीक है, लेट्स सी, वी ट्राई टू फिगर आउट. 2019 है, ऑब्वियसली दैट हैज टू बी द ईयर. 24 है, सो दैट हैज टू बी योर डे. 5 है तो दैट हैज टू बी अ मंथ. सो बेसिकली यहाँ पे यू हैव आपके ब्रैकेट्स में ईयर, मंथ एंड डे. सिंपल, दैट्स फाइन. तो आपके डेट्स मिल गए आपको यहाँ पे अभी, ठीक है, डेट्स मिल गए, या आपके x वैल्यूज बन चुके हैं. यू गॉट दिस एज योर x वैल्यूज, यू आर प्लॉटिंग द डेट्स. ओके, ये अपना मैटप्लॉटलिब का MPL डेट्स करके यू कैन इंपोर्ट इट विद डेट्स का अलग से. सो फ्रॉम मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब इज योर मॉड्यूल, dates is your sub module or class that you will be importing as MPL underscore dates. Finish. और कुछ नहीं. You will follow that up with plotting your dates. तो ये x values, ये y values. So 0 1 3 4 6 5 7 ये आपके कुछ भी points हो सकते हैं. ये just for reference हमने plot किया है. That's it. Simple. अभी ये तो just dots है, points है. Let's say मुझे lines के साथ दिखाना है, तो सिंपल प्लॉट डेट्स, लाइन स्टाइल, सॉलिड. ऊपर क्या था? लाइन स्टाइल. लाइन स्टाइल नहीं रहेगा आई गेस, यहाँ पे सीधा डेट्स प्लॉट क्या रहेगा? कोऑर्डिनेट्स को. परफेक्ट, ये तो सिंपल था. ग्राफ प्लॉटिंग करते ही रहोगे सब लोग, जो भी है सब लोग 12th में तो किया ही रहेगा, 10th 12th में. दैट्स इट, उतना ही है ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, एनी डाउट्स, क्वेरीज? ओके, ठीक है, नेवर माइंड. हाँ, okay, now let's work on our CSV file. यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है? ठीक है, we'll see, we'll check out. ये तुम लोग भी यही वाले CSV फाइल की बात कर रहे थे क्या, या फिर अलग वाले की? ठीक है, we'll see क्या है इसका इशू. एक मिनट, I'll have to charge my laptop. My bad. Okay. हाँ, तो we'll just check this out. I think इसका डेटा ऐड नहीं हुआ है. Let me just check एक बार. आर्या, are you there? Yes, Anika. Actually, I am coding with you simultaneously, but it's showing error in the collab file. Oh, It is showing this is authorized oh, by अच्छा, Google. ओके. हाँ हाँ, तो डू वन थिंग ना, यहाँ पे दिखेगा आपको, फाइल जाओ एंड ये दिख रहा है सेव अ कॉपी इन ड्राइव, हाँ. उसको कर लो. एंड आपको कॉपी पे करना पड़ेगा क्योंकि हमने क्या किया ना, बहुत लोग विल बी चेकिंग दैट फाइल आउट, तो आपको एज अ व्यूअर उसको देखना पड़ेगा. So we Okay. don't want edits to be made, and going forwardly, let's say we have to share it. वही है issue basically. ठीक है? Okay. Yeah. Thank you. All right. Welcome. Yes, Vedant, I'm there. All.
हाँ, ये CSV फाइल जस्ट शेयर इट ना, या फिर डेट एडेड है हमारे पास PDF में। हाँ वेट, आई शो द CSV फाइल एंड लाइक इधर डेट एडेड चेंज किया था ना, तो नीचे नेक्स्ट कोड में ही बराबर से किया हुआ है. इट वाज जस्ट ओके, टू शो द एरर. ठीक है, परफेक्ट, ऑलराइट, ठीक है। सो या फाइन, तो ये बेसिकली सेल वी वोंट रेफर अभी के लिए बिकॉज इट्स गिविंग एन एरर, तो ये वाला हम लोग करते हैं। ऑलराइट, हाँ, तो ठीक है, ये रन हो रहा है अच्छे से। ऑलराइट, नाउ आई एक्सप्लेन दिस वन। डेट एडेड का आपका रहा होगा DF में, एक बार चेक करता हूँ। DF में ही df डॉट हेड दिखाना बेटर रहेगा, बट ठीक है। सी डेट एडेड का है यहाँ पे कॉलम, विच इज गुड, फाइन। सो वी हैव आवर डेट्स हियर, टू डेट टाइम करके, PD का जैसे वी हैड PD डॉट कट, PD डॉट वैल्यूज काउंट, PD डॉट डेटा फ्रेम बनाने के लिए, वैसे ही टू डेटा डेट टाइम का फंक्शन है। डेट एडेड जैसे हमने ईयर मंथ और डे का फॉर्मेट देखा ना यहाँ पे ऊपर, लाइकवाइज वही है ये, सिंपली। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये वापस रीएक्सेस कर रहे हैं टू डेट टाइम करके। अभी मैं लेट से ये रन करता हूँ, तो इन दैट केस आपका आई थिंक ये अपडेटेड वाला ही है, 2023 11 10, या दिस इज अपडेटेड वन। तो ओरिजिनली आई डोंट वांट टू फाइंड आउट क्या था अभी के लिए, must be something bad, but ठीक है, let's see, we'll work on it. So let's go down, हाँ, okay, perfect। अभी फिक्स साइज, हाँ, ओ हाँ, फिक्स साइज तो बताया नहीं है तुम लोग को। लेट्स से वी कीप दिस एज 2022,6। यप, सो यू कैन सी अपना प्लॉट थोड़ा वाइडर हो गया है। दिस लुक्स लाइक योर ट्रेडिशनल ट्रेडिंग वाला प्लॉट ओनली ऑलमोस्ट। तो एज यू कैन सी अभी बेसिकली रीसैम्पल करना है हमें। तो अभी रीसैम्पलिंग का कंसेप्ट, लेट्स से हमें मंथ के हिसाब से ग्रुप करना है यहाँ पे। लाइक यहाँ पे 01 है, 03 है, 05 है, 07 है, 011 है, 09 है, 07 है। उसके हिसाब से प्लॉट वैल्यूज लेने के लिए यू विल यूज रीसैम्पल, एंड ऑन इज बेसिकली आपका कॉलम जो आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक है ना। ये रीसैम्पल करेगा, बट हमें उसका सेल्स चाहिए एंड सेल्स का सम चाहिए फॉर दैट स्पेसिफिक मंथ। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कैन एनीवन टेल मी? अनम्यूट एंड आंसर। अनम्यूट कर सकते हो, ऐसे ही बोल सकते हो। क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक दिस प्लॉट इज डूइंग? दिस इज एन important क्वेश्चन अभी, क्योंकि देन this will explain, this will help me understand how much you guys have tried to figure out. Wait, I'll show you the cell again. What do you think this is doing? I'll वेदांत, wait एक बार क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर ले। हाँ हाँ, ठीक है। ये अभी मैं तुम लोग को ये कोड नहीं देता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट शोइंग यू दिस कोड, आई एम डायरेक्टली शोइंग यू दिस प्लॉट। यहाँ पे ग्राफ दिखा रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक दिस प्लॉट इज डूइंग? Increment and decrement in the cells. परफेक्ट, मंथ वाइज, राइट। तो मंथ के हिसाब से इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कैसे हो रहा है सेल्स में, वही दिखा रहे हैं हम। दैट्स इट, उसका पूरा कंसेप्ट यही है। प्लॉट डेट जो हमने ऊपर किया है एज इट इज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मार्कर, ठीक है, मार्कर भी दे ही देते हैं, वो था यूज हो जस्ट फॉर रेफरेंस एक। यहाँ पे अभी अच्छे से नहीं दिखेगा, लेट्स से line width, if I can adjust line width equal to 1। यप, हाँ, तो ना ये अच्छे से दिखेगा आपको कि पॉइंट्स आए एंड वी हैव आवर लाइंस एज वेल। दैट्स इट। अभी टू ऑटो फॉर्मेट द डेट्स, ये बेसिकली एक्स एक्सेस पे दिखाने के लिए अच्छे से। लेट्स से मैं इसको भी कमेंट करता हूँ, लेट्स सी हाउ बैड इट गेट्स, जस्ट फॉर फन। ऐसे आएगा, इट वोंट बी एंगल में। अभी ऐसे देखोगे तो इट लुक्स अ बिट ब्लैंड, बट इफ यू वांट दैट एक्सेल वाइब देन या यू शुड गो विद दिस। तो बेसिकली हाँ, सो जस्ट टू प्रिटिफाई योर प्लॉट यू कैन यूज स्टफ लाइक दिस। ओके, अभी इम्प्लीमेंटिंग स्टैक प्लॉट्स, ये थोड़ा कूल रहता है। दिस इज जस्ट फॉर फन, मोस्टली you'll be seeing this as well, but उतना नहीं। बेसिकली यू वांट टू सी कि ये लेट से मिनट्स है, ठीक है। मिनट्स की हर एक प्लेयर ने इस मिनट में
लेट्स से कितने गोल्स मारे हैं या फिर कितने पॉइंट्स अर्न किए हैं, तो प्लेयर 1 का ये है, प्लेयर 2 का ये है, प्लेयर 3 का ये है, उसका रिस्पेक्टिव मिनट्स के हिसाब से कितना है, बेसिकली यही है। एंड ये अपने लेबल्स हो गए। अभी स्टैक प्लॉट क्या करेगा, स्टैक क्या लगता है, इट विल बी लाइक बुक्स का पाइल देखा है, एक साथ बुक्स जब रखते हो तो एक के ऊपर एक आता है, राइट? तो वैसे ही हमारे प्लॉट्स भी एक के ऊपर एक ही आएंगे ऐसे ही। तो यहाँ पे आपको साइड में ये लेजेंड दिखता रहेगा। सो द ब्लू वन इज बेसिकली प्लेयर 1, तो एज पर हिज स्कोर दिस इज व्हाट वी गॉट। लाइकवाइज ग्रीन का ऐसे है डिस्ट्रीब्यूशन, लाइकवाइज रेड का ऐसे है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दिखाने के लिए दिस इज प्रीटी हेल्पफुल। नाउ नोटिस कि दिस डजंट मीन कि रेड हैज अर्न मोर पॉइंट्स बिकॉज वो टॉप पे है, ठीक है? दिस इज बेसिकली जस्ट टू शो कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है डेटा का। अभी अगर हम लोग ऐसे ही देखेंगे तो समवन टेल मी व्हिच स्टैक इज बिगर, यहाँ पे कौन सा कलर हैज मोर वेटेज हियर डिपेंडिंग ऑन द एरिया इट्स कवरिंग? ब्लू। ब्लू, राइट? तो अभी हम लोग ऊपर जाते हैं, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ब्लू का पॉइंट ज्यादा है पर मिनट, एम आई राइट? तो इट मेक्स सेंस दैट ब्लू इज कवरिंग मोर एरिया इन दिस स्टैक। दैट्स इट, इसका कंसेप्ट वही है। परफेक्ट, ठीक है, आई विल मूव ऑन। ऑल राइट, ठीक है। अभी ये लेजेंड थोड़ा साइड में था, तो उसको फिक्स करने के लिए व्हाट वी डिड वाज उसका लोकेशन अपर लेफ्ट कर दिया है। तो इसका लोकेशन आप लोअर लेफ्ट भी कर सकते हो, लोअर राइट भी कर सकते हो, अपर लोअर ऐसे करते करते यू कैन डू इट, दैट्स इट। तो बेसिकली इतना ही है इसका कंसेप्ट स्टैक का। अपर लेफ्ट ही रखते हैं इसको, इट वाज लुकिंग क्लीनर, ठीक है, परफेक्ट। नाउ अभी प्लॉट्स का कलर चेंज करना है, तो अगेन हेक्साडेसिमल ऊपर हमने देख ही लिया वो, तो या यू गेट बेटर कलर्स हियर, ठीक है, दैट्स इट। एंड और क्या है, ओके अभी ये पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी ये लेट्स सी, वील सी व्हाट दिस वन इज डूइंग। अभी ये मेरा प्लेयर 1 का है, प्लेयर 2 का है, प्लेयर 3 का है। लेट्स से मुझे इंडेक्स के हिसाब से जाना है, ठीक है? इंडेक्स के हिसाब से ऑल्सो यू कैन प्लॉट इट, बट देन आई वुड रेकमेंड प्रिफरिंग द ओल्डर वन, ये वाला, ओवर दिस, क्योंकि आपके वैल्यूज फिर सी अभी यहाँ पे लेट्स से हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है? अभी यहाँ पे एरिया सबसे ज्यादा कौन सा कवर कर रहा है, कौन सा कलर, ग्रीन, राइट? तो लॉजिकली अगर ऊपर के लॉजिक के हिसाब से जाएंगे, सो ज्यादा एरिया बेसिकली मींस ही हैज अर्न मोर पॉइंट्स, बट यहाँ पे वो केस नहीं है। यहाँ पे द थिंग इज वी आर गोइंग इंडेक्स वाइज, बेसिकली ये जो लेफ्ट में है, जो राइट में वैल्यूज है ना, उसके हिसाब से जा रहा है। सो दिस इज जस्ट टू शो अपना पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जो यहाँ से नहीं दिख रहा है अच्छे से, वो यहाँ पे दिखाने के लिए इंडेक्स के हिसाब से, या फिर ये पॉइंट्स के हिसाब से दिखाने के लिए, दैट्स इट। इज दैट can't we use names of the color but not numbers? Yes Siddhi, you can use it, perfect। कुछ भी कर सकते हो आप कलर्स एक बार मैटप्लॉटलिब के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी चेक कर सकते हो। किस्मत, या गो अहेड किस्मत, एनी डाउट्स हियर? Okay, if there are no doubts I'll go ahead। think we've almost reached the end अभी almost। हाँ, तो अभी ओके अभी ये तो हमने ऐसे ही बनाया था पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अभी CSV फाइल के साथ ऑल्सो वी हैव टू वर्क, राइट? ठीक है, नाउ वी विल गो अकॉर्डिंग टू मंथ ईयर, सेम लॉजिक जो ऊपर किया हमने, सेल्स बाय कैटेगरी। जैसे यहाँ पे पॉइंट्स कर रहे हैं, अभी हम लोग वापस सेल्स से ही देखेंगे इसको भी। तो उप्स सॉरी माय बैड, ठीक है, डेट एडेड एंड मंथ के हिसाब से वी विल बी क्रिएटिंग अनदर कॉलम। तो मैं इसको अभी रन करूंगा, तो यहाँ पे DF में अभी इफ वी चेक मंथ ईयर ऐड हो गया है, ठीक है, डेट एडेड के साथ। तो अलग से वी गॉट अपना मंथ ईयर एज वेल। नाउ सेल्स बाय कैटेगरी अगेन वही, हाँ तो ये थोड़ा अभी डिफिकल्ट रह सकता है, ठीक है।
ग्रुप बाय का लॉजिक वही है, हम सारे मंथ ईयर के हिसाब से एंड कैटेगरी के हिसाब से डेटा को ग्रुप करेंगे पहले, फिर एक मिनट में सेल्स बाय कैटेगरी भी दिखाई देता हूँ, सेल्स बाय कैटेगरी, ओके राइट। तो अभी आपको दिख जाएगा कि कैटेगरी एंड मंथ ईयर एक ही ऐसे ये दिख रहा रहेगा, ये इंडेक्स के हिसाब से ही लिया गया है एंड हम लोग हर एक इंडेक्स के हिसाब से इसको दिखा रहे हैं बस। सी आर्ट्स एंड क्राफ्ट ये तो कैटेगरी है ना हमारे, एम आई राइट? ठीक है, मंथ ईयर तो ये है अपने लेफ्ट में जो दिख रहा है, दैट्स इट। तो बेसिकली वही किया है। अभी अनस्टैक का कंसेप्ट इज बेसिकली हम लोग जब ऐसे करेंगे ना, विदाउट अनस्टैक भी दिखा दूं क्या? नेवर माइंड, अनस्टैक में ऐसे ही बता देता हूँ आपको। अनस्टैक अगर हम लोग अनस्टैक नहीं करते तो ऐसे हमारा पॉइंट्स आता ही नहीं। वो जैसे टॉप में वी आर गेटिंग ये कैटेगरी एंड लेफ्ट में वी आर गेटिंग मंथ ईयर, दैट इज बेसिकली फॉर दैट। एक मिनट में, यू नो व्हाट, आई विल जस्ट शो इट टू यू विदाउट अनस्टैक आल्सो। एंड सेल्स बाय कैटेगरी ऐसे आता। अभी इससे तो कुछ समझ नहीं रहा है, तो बेसिकली आई हैव टू अनस्टैक मंथ ईयर के हिसाब से एंड कैटेगरी के हिसाब से, सो दैट इज व्हाई वी हैड एडेड दैट। सिंपली उसका रीजनिंग वही था। अभी मैं ये वापस रन करता हूँ एंड वी गो बैक टू आवर क्लीनर डेटा सेट। परफेक्ट, आई होप ये समझा है। फिल एन आई थिंक वी हैड कवर्ड इन पैंडास ओनली। तो बेसिकली जो भी नल वैल्यूज रहेंगे उधर जीरो डालना है हमें, दैट्स इट। ठीक है, ओके। नाउ वी कम बैक टू अपना स्टैक प्लॉट। अभी पाई चार्ट में का इशू याद ही रहेगा सबको, हमने बहुत सारे वैल्यूज एक साथ यहाँ पे डाल दिए, तो दिस इज योर स्टैक। अब यहाँ पे कुछ समझ रहा है? नहीं ना? तो वही, तो जस्ट टू फिक्स दैट, instead of doing this we will take top 5 again, top 5 coming to the rescue as always. So yeah, so now this is way cleaner, right? So basically stack plot but for categories month wise. Now this is a plot that you would like to show, right? This is what would, that is, this looks very statistical as well, this is impressive, and it has a value as well to it. So yeah, all in all this was stack plot abhi ke liye. Right. Now let's look at scatter plots. This is my personal favorite. You can apply this anywhere to any category of data. And yeah, that's about it. अभी C1, okay, हाँ, sneak peek मिला तुम लोग को यहाँ पे। Style हम लोग C1 use करें। C1 एक अलग मॉड्यूल है which we will be covering later. Alright. तो वो कल हम लोग देख लेंगे in detail. But अभी के लिए just understand it's a separate module that Matplotlib हम लोग बस export कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पॉइंट्स है, एक्स वैल्यू, एक्स सॉरी माय बैड, एक्स कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स, वाई कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स, दैट्स इट। हम लोग बस पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे, दैट्स व्हाट स्कैटर इज बेसिकली, स्कैटर्ड पॉइंट्स, इट्स इन द नेम इटसेल्फ, दैट्स इट। ओके, नाउ अभी लेट्स से मुझे पॉइंट्स तो दिख रहे हैं, लेट्स से मुझे बहुत बड़े देखने हैं, मुझे ऑलरेडी चश्मा है तो मुझे और अच्छे से देखना है मुझे। तो मैं इसको 100 पे रखता हूँ। लेट्स से मैं 10 करूंगा तो ओके, एक्स इज नॉट डिफाइंड, मैंने रन नहीं किया क्या, सॉरी, ये सेल रन करना है मुझे। ओके हाँ, अभी यू हैव योर एक्स इज वेल। अभी ये थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो गया है, इवन फॉर द फोक्स हु डोंट हैव स्पेक्स। लेट्स कीप इट 200। So this is what you'll get basically point. So S is basically आपका size या फिर radius adjust करने के लिए। तो मैं इसको अभी 100 पे लाता हूँ वापस, so that you can see it clearly. That's it. अभी scatter तो इतना ही था। तो let's say मुझे ये डॉट के जगह क्रॉस लगाना है तो वापस मार्कर ही यूज करूंगा मैं as it is. एंड कलर ग्रीन रखना है तो हाँ, तो पीपल वर आस्किंग ना कि कलर नेम के साथ हम लोग कर सकते हैं, वही है। अभी मैं रेड करता हूँ, हो गया, दैट्स इट, रेड। ब्लू करता हूँ, ब्लू। वायलेट करता हूँ, आई एम नॉट श्योर वायलेट रहेगा क्या, बट वो तो शॉर्ट वायलेट रहना चाहिए, वायलेट भी है,
ठीक है, फेयर इनफ, दैट्स इट. प्ले अराउंड विथ योर कलर्स. पूरा कलर पैलेट है तुम लोग के पास, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. ये और कस्टमाइजेशन करना है, लेट से एज कलर लगा दो, लाइन विड्थ लगा दो, पिंक रखना है पिंक रख लो, जो करना है कर सकते हो तुम लोग. ब्लू करना है ब्लू भी कर लो. तो कुछ पिंक में आएगा, उसके नीचे वाला ब्लू में आएगा, दैट्स इट. आर्ट, बहुत लोग बोल रहे थे मॉडर्न आर्ट कर लो, बनाते जाओ, पॉइंट्स प्लॉट करते जाओ. Isn't scatter used a lot in regression ML graphs? Baby, हाँ हाँ, अरे भाई regression of course भाई. तुम लोग अगर if you guys are into ML clusters में भी mostly scatter ही use होता है. Baby pink is the best. Yeah, okay, cool. ठीक है. All right, finally we've almost reached the end I guess. हाँ ठीक है, और कुछ बचा है क्या? दो और है, ठीक है, we'll cover it. Let's move towards some real world data using CSV file. Again, group by. अभी at this point you guys must be familiar क्या हो रहा है यहाँ पे. Aggregation is basically हम लोग को specifically mean लगाना है, median लगाना है, उसके लिए है. तो price का mean कर रहे हैं हम लोग, rating का mean कर रहे हैं categorical data के लिए. तो मैं ये एक बार ये भी run ही कर देता हूँ. I'll show you category data यहाँ पे. Category data. Perfect. तो या बोरिंग ओल्ड नंबर्स भाई, प्लॉट्स के साथ क्यों ही नंबर्स के साथ खेलोगे तुम लोग. तो बस देखने के लिए यू जस्ट रेफर इट, बट दैट्स दैट. फॉलो इट अप विद दिस. अभी कैटेगरी ये है, कैटेगोरिकल डेटा का कैटेगरी कॉलम, कैटेगरी डेटा का प्राइस कॉलम, रेटिंग कॉलम रिस्पेक्टिवली हम लोग ये वेरिएबल नेम्स में डाल रहे हैं. ठीक है, अभी ये, हाँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर ML एंड डेटा साइंस. मैं डेटा बोल रहा हूँ, डेटा साइंस. तो यहाँ पे क्या होगा ना, कैटेगरी आपका तो इट्स टेक्स्ट, राइट. तो अभी व्हेन यू आर प्लॉटिंग ग्राफ्स, ये प्लॉट करते समय यू कांट गिव इट टेक्स्ट वैल्यूज, यू हैव टू गिव इट नंबर्स टू प्लॉट. तो उसको कन्वर्ट करने के लिए यू विल यूज दिस डॉट कैट डॉट कोड्स. बेसिकली आपको नंबर्स आएंगे. अभी मैं कैटेगरी कोड्स भी प्रिंट कर दिखा देता हूँ आपको एक बार. लुक एट दिस कैटेगरी कोड्स. रन. ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 24 तक जाता है वो. तो बेसिकली 24 कैटेगरीज है हमारे, उसका नंबर्स के हिसाब से हमने बस दिखाया है. दैट इज इट, सिंपल. वापस स्कैटर प्लॉट लगाओ, प्राइस एक्स पे, रेटिंग वाई पे, एज कलर ब्लैक, लाइन विड्थ 1, अल्फा आपका 0.75. हाँ, मैं अल्फा आपको दिखाता हूँ क्या है अभी, एक मिनट में. ठीक है, ये डॉट्स दिख रहे हैं आपके अभी. अगर मैं इसको 0.55 करता हूँ तो कुछ चेंज दिखेगा आपको. आई एम नॉट श्योर, जो लैपटॉप पे उनको ही अच्छे से दिखेगा. एक मिनट और कम करता हूँ मैं, 0.25 करते हैं. ये दिख रहा है अभी, बहुत लाइट हो गया है. बेसिकली अल्फा इज जस्ट टू चेंज द कलर डेंसिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक पॉइंट. दैट्स इट, खत्म. सी मैप इज बेसिकली वर्डिस. वर्डिस आपका कलर स्कीम है. जैसे ये बेसिकली हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स के साथ डील कर रहे हैं ना, तो हर एक को अलग कलर देना है, तो उसके कुछ कलर मैप्स आते हैं. अभी मैं वर्डिस की जगह आई थिंक इन्फर्नो करके भी एक आता है, वो भी यूज कर सकते हैं. तो इन्फर्नो विल भी थोड़ा पर्पलिश एंड येलो कलर्स के साथ. सो या, तो या अभी के लिए तो वही था प्लॉट. एंड वन मोर शुड बी देयर, लॉगरिथमिक स्केलिंग वाला है क्या? ओके, एनहांसिंग द प्लॉट विद लॉगरिथमिक स्केल्स एंड कलर बार. सेम प्लॉट अगर मुझे ये कलर बार के साथ दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली यहाँ पे एक कलर बार करके आता है, plt.colorbar.scatter के लिए. तो यू बेसिकली पुट दैट, एंड उसका लेबल कैटेगरी है. एंड ये बेसिकली हमने नंबर्स में कन्वर्ट किया था ना. अभी लेट्स से हम क्लाइंट को दिखा रहे हैं, ठीक है, क्लाइंट को दिखा रहे हैं, उसको ही वोंट अंडरस्टैंड कि कैटेगरी 1 क्या है, कैटेगरी 2 क्या है, कैटेगरी 3 क्या है, राइट. यू हैव टू शो हिम टेक्स्ट आल्सो. तो ये कलर मैप है बेसिकली फॉर दीस पॉइंट्स. सिंपल, खत्म. अभी ओके, ट्री मैप भी है. आई थिंक वी शुड कवर दिस आल्सो एक बार. ठीक है, ट्री मैप आल्सो आई विल शो यू. स्क्वेरिफाई, आई विल जस्ट रन एक बार तुम लोग के सामने ही.
let it install. I hope you guys are familiar with pip logged in. अरे हाँ, शौर्य, yes. लॉगी लॉक्ड इन वो सब खेला ही रहेगा तुम लोग ने ऑलरेडी. यू गाइस मस्ट बी प्लेइंग इन योर मैथ्स के कोर्सेज. ठीक है. या पिप इंस्टॉल हो गया है. ठीक है. अभी स्क्वेरिफाई क्या करता है? ऑलराइट, वील कवर दैट एज वेल. सिटी डेटा है आपके पास. ये बेसिकली एक रफ डेटा हमने लिया है प्लॉट करने के लिए. सिटी है, पॉपुलेशन, सिटी पॉपुलेशन. सिटीज डिक्शनरीज हमने किया था उस दिन, तो की वैल्यू पेयर करेक्ट. हान ने अच्छे से सिखाया रहेगा, मैं था वो मीट में भी. so yeah, he had taught you guys well, pretty well. तो cities is keys, sizes is values, that's it, खत्म. वही करना है. उसको हम लोग ये लिस्ट, एक लिस्ट में डाल रहे हैं हम लोग. सिटीज का अलग लिस्ट, साइजेस का अलग लिस्ट. नाउ इफ यू वांट टू प्लॉट ये ट्री मैप, तो ट्री मैप थोड़ा इज सिमिलर टू आपका बार ग्राफ, but I mean stack plot. बार ग्राफ बोल रहा हूँ, stack plot, but it will show you with like आपका proper area coverage in this format. तो जैसे आपने वो crossword puzzles देखे रहेंगे ना, वो word के साथ आता है. I don't know what you call it exactly, word map के जैसे. तो basically वही है ये. In short, this is just for fun. You don't use the wordle, correct, Shaurya, wordle, my bad. तो basically this is just that. तो या दैट्स अबाउट इट. अभी तुम लोग को कलर्स डालना ही है. विदाउट कलर्स व्हाट डेटा विजुअलाइजेशन विल यू डू? सो वही है ये, दैट्स इट. सो अभी अभी ये तो डमी डेटा था. लेट्स वर्क विथ अपना CSV फाइल. वापस we'll do the same thing. We'll group by city, we'll group by sales again. Ascending equal to false, तो descending values लेंगे हम. Head equal to 8. What do you think this does? You guys can answer in chat also. ये already cover हो चुका है. Just let me know. तब तक मैं थोड़ा WhatsApp भी देख ही लूँ. ठीक है, fair enough. Top 8 ones, perfect, Daniela. Okay, thank you, Daniela. That's the right answer. So top 8 values, you will be using that just to check the top cities here. All right, perfect. Now you'll follow that up with the necessary fields. So ye wapas, it's your list, I mean series data set again. And yeah, that's about it. Okay. Normalization we will cover in depth again in the final project, but in general what we're doing is, okay, yeah, sure, you're right. Smaller data points निकालने के लिए you will be using okay, this is with reference to head, I guess. But yeah, normalization भी वही करता है. Basically you have values from, let's say, 1 to 100, but I want to show a smaller range for that, so I can bring that down to 0 to 1. So that is the basic concept of normalization. We will cover this in detail in final project on day 6. Don't worry, we will do that in detail tabhi as well. So abhi ke liye just understand, we are just shortening our range for the values. That's it. Again, we had used अपना color scheme ऊपर ना, word is ये color bar के लिए. Where did it go? ये we had used word is here, right? That's the same colors that we've used here as well. So yeah, that's it for अपना colors यहाँ पे. You can check out ये collab file अलग से भी. And yeah, so final conclusion that we are getting from all of this is that Pittsburgh has the greatest sale because उसका color ज़्यादा है. Also, one more thing, colors will also play an important role if our let's say values are very close. हम लोग ने scale किया है ना 0 to 1 में. So in that case, colors will play a bigger role compared to the area it's covering. So that's about it for today. If you guys have any queries, you can ask us. So I'll just stop sharing abhi. Does pictogram or pictograph used in Matplotlib or not? Pictogram भी है. There is a graph for that as well अलग से. But it's not that widely used. Seaborn में अच्छे से you'll get it compared to Matplotlib. So we'll try to cover that in Seaborn tomorrow. But we've already covered a lot of plots today, and I think we've reached our max limit also. 8:30 is a pretty long session, so I think it's pretty good if we wrap it up here अभी के लिए.
Sanika, if you have a doubt, you can always DM us alag se. We'll always answer. Anyone else has any other doubts? कैसा लगा सबका आज का इवेंट? आज ग्राफ्स करके, मैटप्लॉटलिब करके, हाउ? Yeah, welcome Nikhil. Welcome Mohammed. Welcome Scott. शुभम, स्कैट प्लॉट में वाई एक्सिस के वैल्यूज मैटर नहीं करेंगे क्या? हाँ, ऑफ कोर्स करेंगे. एक्स एंड वाई है ना. स्कैटर प्लॉट इज स्कैटर पॉइंट्स. पॉइंट्स का एक्स एंड वाई के बिना यू वोंट गेट अ पॉइंट. सो एक्स एंड वाई बोथ विल इक्वली मैटर. हाँ हाँ, कैगल जस्ट चेक इट आउट. या डेफिनेटली. कुछ रहा इश्यूज, जैसे वो एरर यू वर मेंशनिंग राइट सानिका, कि यू नॉट एबल टू लोड द डेटा सेट, जस्ट लेट मी नो. उसके वॉट एवर सेल्स यू हैड रन, जस्ट शेयर दैट ऑल्सो अलग से. इफ यू वांट आई हेल्प यू ऑल्सो. हाँ मैं हाँ, वो एपीआई की मैं वो डाल के डेटा बताते हैं. ठीक है. मैं वो डेटा सेट ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा. सो लाइक इफ यू कैन नॉट इंपोर्ट इट थ्रू द लिंक, तुम मैन्युअली डाउनलोड करके भी कर सकते हो. अपलोड कर दो अपने नोटबुक में. एसटीके प्लॉट, स्टैक प्लॉट, अच्छा. ओ हाँ हाँ, स्टैक प्लॉट में. हाँ, सी अनलेस यू आर एक्सप्लिसिटली यूजिंग अपना what is, sorry, explicitly you are mentioning अपने indices अपना y वाला ना, in that case it will matter. Otherwise it will simply just look at the population या फिर the frequency of that specific score या फिर value in that stack. So in that case, हाँ शुभम, yes, तो y उतना matter नहीं करेगा if you're not mentioning indices. I forget syntax of Matplotlib. अरे it's fine, it is fine, no worries. वो होता है syntax. I'll tell you something. I have been using Matplotlib for almost 4 to 5 years. I will still forget even the most basic syntax. Marker and all that I'll keep forgetting. And yeah, it's honestly always nice to have documentation by your side whenever you're coding. In this Matplotlib, from all the parts, which are the most important? Scatter plot, फिर आपका बार चार्ट, हिस्टोग्राम, दैट इज इम्पोर्टेंट. पाई चार्ट इज बेसिकली फॉर, लेट से आपको डेटा का रिप्रेजेंटेशन दिखाना है तभी यूज करोगे आप. तो ऑल इन ऑल आई वुड से स्कैटर प्लॉट एंड लीनियर प्लॉट, जो टाइम सीरीज वाला था ना वो वाला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमएल एंड डेटा साइंस इन जनरल. तेजस, थैंक यू सो मच. एनी गुड इजी डॉक्यूमेंटेशन वेज? या आई गेट इट. अभी कुछ है नहीं, हमारा ही देख लो. वी हैव आवर कोलैब फाइल, नो, यू कैन ऑलवेज रेफर इट. दिस इज ओनली फॉर यू गाइस. अलग से इफ यू गाइस वांट प्लॉट्स का, वी कैन ऑलवेज ट्राई टू कीप एडिंग इट. इट्स हार्ड बट या वी विल ट्राई टू डू दैट. हाँ, geeks भाई, geeks for geeks is goated. Anytime you have an issue, you can go there. एनालिटिक्स विद्या भी करके एक आता है, वो अगर प्रोजेक्ट्स के लिए देखना है देख सकते हो. And medium is in general for projects. Can we represent data using smooth curve? Bell curves we'll cover in detail tomorrow. So we have a tech team member called Hriday. He'll be covering Seaborn. So it's similar to Matplotlib, but you'll get a larger variety there. Sure, your bell curves, we'll be covering violin plots also. So tomorrow is another great session for data visualization. I hope you guys will attend that as well. So yeah, I think abhi we should wrap up. If you have any doubts, just let us know. Tum log ko bhi, if you guys want to have food or have some fun, otherwise in general, you guys can go ahead. Shubham, Harsh, have you done Andrew NG course? Uh, I have a lot of respect for Andrew NG guy. I mean, like guy, I'm saying G sir, bhai. But to be honest, I have not done his course. It's on my bucket list, but I am more of a book kind of guy, so I read a lot instead of doing courses. So yeah, I have not done it in short. But yeah, Andrew NG is pretty good. 100 pages of ML. That's an excellent resource. You can use that. I have shared the resources that I have used specifically on apna WhatsApp community as well, so you can refer that if you want to know what I have used. So वही है. 100 pages is excellent as well, Ayush. Yeah. और कुछ? Thank you, Ayush. Is it a book? Not exactly. It's an I mean, you could
वेब पेज ही है भाई, देख ले, तुम लोग सर्च कर लो, मिल जाएगा तुम लोग को सब कुछ। अमेजोन पे मिल जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ हाँ, पीडीएफ तो मिलना ही चाहिए, समवन विल हैव डन समथिंग भाई, डोंट वरी, यू विल फाइंड इट ऑनलाइन। दिस इज द फर्स्ट, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। चलो बाय बाय गाइस, आई थिंक वील रैप अप अभी। गुड नाइट। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट अस नो ऑन द कम्युनिटी, और डीएम भी कर सकते हो। थैंक यू। ठीक है, चलो बाय बाय।